Hello students, I am Dr. Balpreet Kaur, Associate Professor in DIPS IMT. Today I am going to discuss the approaches of industrial relations and impact of technological changes on industrial relations. So first of all, we will discuss the approaches of industrial relations. There are 6 approaches. First one is psychological approach, second is sociological approach, and third is socio-ethical approach, human relations approach, Gandhian approach, and Dunlop's system approach. First is psychological approach. The psychological approach views the issues of industrial relations embedded in the attitude and perceptions of the key participants. Basically, the psychological approach depends upon the attitude and perception of the participants or the workers and employees working in the organization. So there is one person, Mason Harry, who studied the impact of perception of an individual on his own behavior. In his study, he analyzed the behavior of two dissimilar groups. One group is executives and the second one is union leaders. And this test was conducted with the help of a technique that is known as TAT. To conduct the test, photograph of an ordinary middle-aged person was taken as an input and it was shown to all the groups. So the photograph was rated by the groups in a different manner. Union leaders refer to the person in the photograph as a manager, while the group of executives identified it as the union leader in the photograph. So there is dissimilarity in the perceptions of the groups. Like the first group, first group, the union leader referred the person as a manager, and the second group, who are executives, they identified the person in the picture as a union leader. So there is difference in the perception of the perception of the employees and workers, which creates sometimes problems in the organizations. The second approach is sociological approach. The sociological approach compares the industry to a small social world that comprises of a mix of several individuals and groups having different type of personalities, family background, feelings, liking and dislikings, and other personal factors like perceptions, behavior, attitude. Since no two members in an industrial society have similar attitude and behavior, and this leads to the problems of conflict, disharmony, and negative competition among the members. जैसे अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी में सभी लोगों की नेचर एटीट्यूड की बात करते हैं बिहेवियर की तो सिमिलर नहीं है. देयर इज डिसिमिलैरिटी इन द नेचर ऑफ द पर्सन. In the same way, in case of organizations, industries, there are so many persons working together, but there is difference in the personality, nature, and attitude of the person, which creates conflict in the organizations. And the next is socio-ethical approach. According to this approach, for maintaining good industrial relations, it is necessary that the labor and management understand their ethical responsibilities. Ethical responsibility means what is good and what is bad. This can only be achieved with the help of mutual cooperation and by developing a good relations or sensitivity towards each other's issues. And the next is human relation approach. Alton Mayo was the founder of the human relations approach, and this approach emphasizes on the policies and methods that can be implemented to improve the workers'
self-esteem, competence, and job satisfaction level. Basically, this approach is related to the human relations, how we can create better relations and how we can satisfy the workers in the organization. The next is Gandhian approach. Mahatma Gandhi is popular for his contribution towards the development of human beings and his belief of Ashima and non-violence. जो महात्मा गांधी जी हैं उनका मेन मोटिव क्या है कि आपने वायलेंस क्रिएट नहीं करनी, आपने शांति के साथ काम करना है. So he considered all the human beings good and believed that the individuals are not the ones who are responsible for the problem. गांधी जी का मानना ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रीजन कोई पर्सन नहीं है, उसका रीजन क्या है कि प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं. तो हमें सबसे पहले क्या ठीक करना पड़ेगा, अपना सिस्टम. He laid stress on maintaining the dignity of the employees by accepting each individual worker as a human being. तो वो कह रहे हैं कि आपने किसी भी पर्सन को inferior ट्रीट नहीं करना, they all are equal, तो आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है. लेकिन जो गांधी जी हैं वो कहते हैं कि मैं स्ट्राइक्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, कि अगर वर्कर्स की डिमांड को फुलफिल नहीं करते इंडस्ट्रियलिस्ट तो वो स्ट्राइक्स कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्राइक कब करेंगे, जब पहले आराम से बात करने के बाद उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता. And the last approach is Dunlap's approach. According to Dunlap, an industrial relation system at any one time in the development is regarded as comprised of certain actors, certain context, which binds the individual relations systems together, and a body of rules created to govern the actors at the workplace and work community. जो डनलैप अप्रोच है इसका मेन पर्पस क्या है कि आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को अच्छा बनाना है, एक बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपकी वर्क प्लेस में हार्मनी क्रिएट होएगी. And the next is technological change. Technical change and industrial relations are linked together. There is need for a clear-sighted understanding of all the effect of technical change at the workplace, and this would entail a conceptual framework in which the interaction between social and technical factors could be properly identified. कि हमने देखना है कि जो हमारा सोशल रिलेशंस है और टेक्निकल फैक्टर्स हैं, इन दोनों में हमें एक इंटरेक्शन तो लेके आनी है, लेकिन हमने दोनों को लिंक करना है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं, वो किसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो हमारे वर्कर्स के ऊपर, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर. अगर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करते तो उस केस में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं. So at the establishment level, the innovation process typically involves a balancing of the social, economic and technological vectors of change. इसलिए उन्होंने बात की है कि अगर हम इनोवेशंस करना चाहते हैं, न्यू टेक्निक्स को अडेप्ट करना है अगर हमने, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हार्मनी क्रिएट करनी है. अगर हार्मनी और कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी इंडस्ट्री में, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बैलेंस करो बिटवीन सोशल, जो सोसाइटी है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. अगर इन तीनों में एक अच्छा लिंक क्रिएट होएगा तभी हमारी जो इंडस्ट्री है वो सक्सेसफुल बनेगी, अदरवाइज वो डाउन जाना शुरू हो जाएगी.
where technological innovations involve significant change in work practices, and such change will be facilitated when the forms of cooperation it demands and the cost and benefit it creates are congruent with the respective power and policies of the management and unions. Congruent means coordination, cooperation और similarity. सो द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आएंगे, वो तो पॉसिबिलिटी है ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि कॉपरेशन होना जरूरी है। जो कॉस्ट आएगी वो भी हमें बियर करनी पड़ेगी, जो हमारी टेक्नोलॉजी हमने न्यू टेक्नोलॉजी लेके आनी है, न्यू मशीन्स लेके आनी है, राइट। तो उसके साथ हमारा खर्चा तो बढ़ेगा लेकिन हमें उसके बेनिफिट भी मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, आपने उनमें और जो हमारी टेक्नोलॉजी के साथ चेंजेस आने वाली हैं उन दोनों में हार्मनी और कोऑर्डिनेशन लेके आनी है। अगर नहीं आएगी तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी, which leads to industrial conflicts. Impact of technology on industrial relations. Basically, there are two major factors. First one is the impact of technological change on levels of employment and nature of skills. देखो, अगर टेक्नोलॉजी आ गई तो जो हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स थी वो तो हमारी खत्म हो जाएगी। हमने क्या करना है, अब हमने मशीन्स को यूज करना है इसकी बजाय, लेबर की बजाय। तो उस केस में क्या आएगा कि जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा डाउन जाएगा। जो काम पहले लेबर करती थी अब कौन करेगा, उसकी जगह पे मशीन्स काम करेंगी। और नेचर ऑफ स्किल में चेंज आएगा। अब हमें वो पर्सन चाहिए, हमें उन पर्सन को रिक्रूट करना पड़ेगा जो स्किलफुल है, जिनको मशीन्स चलानी आती है। नेक्स्ट है द ग्रोइंग रेजिस्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो जो हमारे ट्रेड यूनियंस है वो ऑलवेज रेजिस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? अगर हम करेंगे तो हमें दोबारा ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, हमारा रोल कम होएगा, क्योंकि हमारा रोल किसने प्ले करना, मशीन्स प्ले करेंगी। तो हमें नुकसान होने के चांसेस हैं, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट आने के चांसेस हैं। तो इसी की वजह से वो रेजिस्ट करते हैं। लाइक मैंने दिया है पॉइंट्स। ट्रेड यूनियन रिस्पॉन्स, जो ट्रेड यूनियंस है वो कहते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करना, कि उनको अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का डर होता है। प्रॉब्लम ऑफ रीट्रेनिंग, उनको लगता है कि हमने दोबारा फिर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मेजर बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, और कुछ कहते हैं कि हमें कुछ बेनिफिट्स भी है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होएगी तो जो इंडस्ट्री है वो बेटर वे से वर्क करेगी, उसको प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे और कॉस्ट सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कई बार वर्कर्स क्या कहते हैं कि हमने जो मॉडर्न टेक्निक्स है उनको फॉलो नहीं करना, हम ओल्ड जो टेक्निक्स है हम उसके साथ ही ठीक है। नेगोशिएटेड चेंज, जो ट्रेड यूनियंस है वो कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना, अगर हमें आपने निकालना है तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ऐसे करके फिर वो क्या करते हैं, वो नेगोशिएशंस करते हैं विद द इंडस्ट्रियलिस्ट। एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, अगर आप जो लेबर है, जो एम्प्लॉयज है, उन्होंने अगर न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना तो उसके लिए उनको एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग पहले प्रोवाइड की जाएगी, देन उसके बाद ही उनको उस प्लेस पे उस पोस्ट पे प्लेस किया जाएगा। सपोर्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो अगर कुछ भी हमने अगर चेंज लेके आना है तो जो हमारी मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, तो वो सपोर्टिव होने चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी चेंज लेकर आने में क्या होंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे। So hope the lecture is clear to all the students.